Hello everyone, welcome to the syllabus layers. In this video, I will be covering all the leftover questions from the topic judiciary, which is a part of the unit political institutions in India. So this is the part 3 of the video series on judiciary. The first question which we'll be doing was asked in December 2018. Who among the following has criticized the Supreme Court as a deeply paradoxical institution because it wields immense power with limited accountability? ये स्टेटमेंट प्रताप भानु मेहता जी ने बोला था. So he is a very big critic of the Supreme Court. So according to him, the Supreme Court has very limited accountability और पावर बहुत सारी है उनके पास. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट हिज स्टेटमेंट उन्होंने बोला था कि इमेंस पावर जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू द जुडिशरी हैज़ द पावर टू मेक पॉलिसीज ऑल्सो, है ना. सॉरी, जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है. However, on this at the same time they have very limited accountability. For example, जो collegium system है, under the collegium system judges appoint themselves. ठीक है, तो कोई भी बाहर से कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी या कुछ भी दे आर नॉट आंसरेबल टू समवन फ्रॉम द आउटसाइड. ठीक है, पूरा उनका खुद का ही इंस्टीट्यूशन है जो विच कंट्रोल्स एवरीथिंग. ठीक है. सो इट वॉज प्रताप भानु मेहता who is a famous political scientist who has criticized the paradox of the court's vast power versus its lack of transparent accountability. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिसंबर 2018 का ये है. Which article of the Constitution enjoins or bounds all authorities to act in the aid of the Supreme Court of India? So ये आर्टिकल 144 में आता है. दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 144, it states that all the authorities, whether civil or judicial, within the territory of India should act in aid of the Supreme Court of India. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. जून 2019 का है. द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट between the center and the states fall under its which of the following jurisdictions? So the answer for this will be original jurisdiction, है ना. original jurisdiction का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स टू सेटल डिस्प्यूट. मतलब एक्सक्लूसिव ज़रूरी नहीं होता है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का ये मतलब होता है कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू सेटल दिस डिस्प्यूट. ठीक है. तो कहीं पे भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मेंशन्ड है कि ये वाला मैटर इज अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट मीन्स दैट यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो एक तो जैसे ये सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में है ना. सिमिलरली इवन फंडामेंटल राइट्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है. हाउएवर यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट जो यहाँ वाला है स्टेट सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स वाला ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, इट इज़ exclusive to the Supreme Court, whereas in the case of fundamental rights it is not exclusive, rather even the high courts have original jurisdiction in this regard. ठीक है. So under article 131 the Supreme Court has exclusive original jurisdiction to settle disputes between the government of India and one or more states. नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का है. दिस इज़ अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. वी हैव टू मैच द रिट्स विद देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग्स. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सबसे पहले दिया है हैबियस कॉर्पस, उसका रहेगा यू शुड हैव द बॉडी ऑफ. देन वी हैव मैंडेमस विच मीन्स टू कमांड, वी कमांड. देन सर्ट्योरारी विच मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. ठीक है. एंड देन द लास्ट वन इज को वारंटो विच मीन्स बाय द वारंट ऑफ. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन 2. नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द रिट ऑफ सर्ट्योरारी कैन बी इशूड बाय द जुडिशरी? देखो, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन में कर सकते हैं. सर्ट्योरारी में होता क्या है, बेसिकली अ हायर कोर्ट issues this to a lower court in order to quash any order which is passed by that lower court.
ठीक है, तो ये कब कब करते हैं, व्हेन द लोअर कोर्ट लैक्स jurisdiction टू पास दैट ऑर्डर, और इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ jurisdiction ऑल्सो। ठीक है, लोकस स्टैंडाई और एरर ऑफ लॉ के केस में नहीं रहता है ये। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू मैच द आर्टिकल्स विद देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट्स। तो सबसे पहले दिया है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 प्लस मोर स्टेट्स, तो ये आया था आर्टिकल 231 में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केसेस टू द हाई कोर्ट ये आर्टिकल 228 में आता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 233। फिर एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 229। ठीक है, so this is a very factual question. So you'll have to have a general idea of nearly all the articles are important, ठीक है, of the Indian Constitution for every exam. Try to at least know कि क्या कौन से article में क्या क्या है, ठीक है, that is important. So the correct answer for this will be option number 1. Next question November 21 का है, the Supreme Court in the case Puttuswamy versus Union of India case had declared which of the following statements as correct. Right to privacy is an intrinsic part of right to life, this is correct. यूनियन गवर्नमेंट मस्ट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 14, 19 एंड 21, दिस इज रॉन्ग, ओनली आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। देन राइट टू प्राइवेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 25, अगेन रॉन्ग, आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, सो ओनली वन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स। ठीक है, तो आई जस्ट टेल यू अबाउट द टाइमलाइन। सबसे पहले गोलकनाथ केस आया था 1967 में। देन वी हैड द केशव नंदा भारती केस इन 1973 wherein the basic structure was one. Then we had Manka Gandhi case 1978 का, एंड लास्ट था मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। ठीक है, इसमें वो DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स में बैलेंस वॉज established. So this is a simple question. The answer for this will be option 2. Next question 2023 का है, which statements are correct regarding the Supreme Court of India? It is an international commercial arbitration can be initiated in the Supreme Court. This is correct. ठीक है, 1996 में एक्ट पास हुआ था under which international arbitration is allowed in the Supreme Court. Then special advisory jurisdiction is present under Article 143. This is also correct. Article 32 gives extensive original jurisdiction for fundamental rights. This is also correct. ठीक है, however ये जो original jurisdiction है, this is not exclusive. Even the high courts have this original jurisdiction in case of fundamental rights. ठीक है, so the correct answer will be option 4 ABC. Next January 25 का है, when the Legal Services Authority Acts 1987 was amended. अच्छा, when was the Legal Services Authorities Act 1987 amended to provide for the establishment of the permanent लोक अदालत? So ये हुआ था 2002 में हुआ था ये amendment, under which permanent लोक अदालत्स were formed under the Legal Services Authorities Act of 1987. ठीक है, so chapter 6A was added to the act in 2002 to provide for permanent लोक अदालत्स for public utility services. Next January 25 का question है, Allahabad High Court was established in which year? This is a very factual question and according to me it is quite tough. ठीक है, पर ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन इन्होंने रिपीट करे थे जून में भी, और हाँ जून में भी 2 बार सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। तो Allahabad High Court was established in 1886. ठीक है, it was originally established as the High Court of Judicature for the northwestern provinces at Agra in 1866. ठीक है, तो originally it was at Agra and later on it was moved to Allahabad. Next again match the following है, वही सिमिलर क्वेश्चन है, हमको हाई कोर्ट्स और उनके रिस्पेक्टिव डेट्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछे हुए हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन।
बहुत फैक्चुअल है ना? बट सिंस दिस हैज़ बीन रिपीटेड अ कपल ऑफ टाइम्स, सो आपको पता होना चाहिए सारे हाई कोर्ट्स का। ट्राई टू जस्ट नो द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स, ठीक है? तो इलाहाबाद का 1866, दिस इज करेक्ट। मतलब वही ये देयर सम मिसप्रिंट इन द टाइपिंग ऑफ द क्वेश्चन, है ना? वही पूछा है हमसे कि कौन सा विच हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। तो the High Court of Allahabad was established in 1866. Then Patna High Court was established in 1916. Then Mumbai High Court was established in 1862. And the last one, Andhra Pradesh High Court was established in 1984, 1954. ठीक है? Bombay is considered to be one of the oldest high courts, while Patna and Andhra are relatively new. They followed on later. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन जून 2025 का क्वेश्चन है। वी हैव टू अरेंज द हाई कोर्ट्स बाय ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है? तो इसमें वही मैं आई जस्ट टेल यू अबाउट द टाइमलाइन। कर्नाटका हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1884। देन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड एट चंडीगढ़ इन 1947। गुवाहाटी हाई कोर्ट in 1948, Kerala High Court in 1956 and Sikkim High Court in 1975. ठीक है? So the correct answer for this will be option number 2. So from these questions you can tell कि ये आजकल काफ़ी पूछ रहे हैं हाई कोर्ट्स का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन विद द डिफरेंट नेम्स ऑफ द हाई कोर्ट्स, बट सिमिलर क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है? So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful. You can also follow our Telegram channel for any updates. Kindly comment on our videos regarding any content suggestions which you may have. Thank you.